Guys, good morning. It's been 7-8 months, right? I'm here in Guwahati and I've been seeing a lot of these Guwahati superbikers zoom past me in all of our rides, in most of our rides. So this is the famous 88 Racing Workshop behind me. This is the one-stop shop for all the superbikers here in Guwahati. And Guwahati में पहले मैंने भी अपनी बाइक का एक सर्विस कराया था, यहीं पे कराया था, exactly इसी जगह पे कराया था. Shashank is the guy. He is the guy who does all the bikes, the inline fours, the twins, the triples, Harleys. He does all the bikes and he is the only superbike mechanic here right now because इससे पहले सिर्फ एक Kawasaki का सुपर बाइक सर्विस सेंटर था यहाँ पे which was functional about a month or two ago, but अब वो भी बंद हो गया है. तो अभी we are all bikers, we have all gathered here at his workshop. पीछे इसकी वर्कशॉप है and we are only waiting for one biker, रह गया है Z900 वाला. And उसके बाद we'll head out for the breakfast ride. Meanwhile मैं तुमको लाइनअप दिखा देता हूँ. Okay, the first bike here we have is the S1000 RR and we have a GoPro Hero Max as well, the 361. This is the beautiful Ducati 959. Wow. You don't realize Ducatis are so beautiful unless you see them in person. He is Karthik. He is the Hayabusa guy. The Hayabusa. We hear Z900 आ गई है शायद. Another 650F. The beautiful ZX6R. I mean, wow. And that's my CBR 650. And there is the Z900. We also have a Interceptor 650. And this is the workshop, you guys. You are, I forgot, David, right? David. He is David. He is the owner of the S1000 RR. And Amitabh, the 650F guy. And Rupam, the Interceptor. Yeah, CS6R, the beautiful CS6R, yes. And this is the 821, I think. Yes, the 821. Alright, so guys, we are off and starting up. पहले एक fuel break होगा छोटा सा. The bike ahead of me is the ZX6R. That is the only commercially available 600 Super Sport right now. R6 is not available in India. CBR 600 RR is not there in India. Triumph Daytona 675 has stopped production. So right now the only 600 track oriented bike in the country. Ahead of him is the Z900 and everybody has got the aftermarket exhausts. In fact, I'm the only biker here in today's group who doesn't have an aftermarket exhaust. Wow. So alright, so guys, today's vlog is going to be something extraordinary because all these awesome super bikes are here. The inline symphony is going to be great. बाइक को थोड़ा लाइन अप कर लेते हैं ठीक से. रेहान ये अपनी है तेरी यार? नाइस. में थोड़ा लफड़ा चल रहा है इसलिए. वो जो वहाँ खड़ी हुई रखी ना वहाँ पे अंदर, क्या हुआ, प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं, वो क्रैश हुआ था, एक दोस्त क्रैश करके दिया था, उसका एग्जॉस्ट नहीं आ रहा है अभी फिलहाल. अच्छा अच्छा, उसके लिए रुका हूँ, बाकी सब ओके. कौन सा एग्जॉस्ट लगा रहा है? अभी TBR लगाऊंगा. TBR, oh nice. लाउड चाहिए अभी. Alright, so guys, the lineup is all set. हम भी सुना देते हैं, हमारी ज़्यादा नहीं है फिर भी. I've not been a part of such group, I don't know, since a very long time. I think it's been 3 years. उसके बाद से आज पहली बार I am part of such a amazing lineup. Alright, थोड़ा टाइट पकड़ो. 1000 RR was like wow, rocket ट्रिप गई हो एकदम. एंड जो मेरे आगे है दैट इज ZX6R, ये बहुत अमेजिंग जाती है. इसका बहुत ही सूदिंग साउंड है यार इस हायाबुसा का.
मतलब नॉट दैट लाउड। ये ऐसा साउंड पसंद है मेरे को, ऐसा लगाना है अगर लगाना है तो। क्या साउंड है ये। तो गाइस ये हाईवे हमने पकड़ा हुआ है, यहाँ से हम टुडे वी आर गोइंग टुवर्ड अमीनगांव साइड। और शशांक बता रहा था कि वहाँ पे देयर इज सम ब्रेकफास्ट जॉइंट। यार प्रॉब्लम पता क्या है, जिस स्पीड से हम लोग चला रहे हैं ना, इस स्पीड में जैकेट बहुत रिक्वायर्ड है। अभी मेरे को ना हवा के जो पार्टिकल्स वो भी लग रहे हैं मेरे हाथ में, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि साला जैकेट पहन के आ ही जाना चाहिए। उड़ गए सारे। That is Shashank on his Ducati 959 Panigale. I think the sexiest looking bike out here today is this one. Look at the tail light of this bike. Amazing how beautifully the Italians have done it. And he is on the Austin Racing. But the twins, I mean, no, sound wise Ducati doesn't stand a chance today. All the inline fours around him. So yeah, the Austin Racing will not be hurt that much today. So guys, a quick update here. This guy I'm talking about, Shashank, he does have a YouTube channel as well. Being the only trusted superbike mechanic here in Guwahati, almost I think in the entire Northeast, and having those contacts while racing in the Buddha International Circuit, you guys can imagine what kind of content he must be having on his channel. So have a look at his channel. I will leave a link in description and also leave the name of the channel here. So if you guys like his content, do subscribe to him. Continuing with the video guys. Thank you. So guys, lovely weather today. मेरे को लग रहा है अभी कि जैकेट पहन लेना चाहिए, क्योंकि I did this stupidity. You know, even if you're feeling hot, you should wear a jacket if you are planning to do this high speed riding. Even if you're doing about 80-90, you need jacket, because after half an hour or 45 minutes into the ride, you start feeling that pinching air in your, you know, exposed part of your body. The moment I'm going above 80-85, the air is pinching. I mean, and I knew this, but still I thought, you know, better than bearing the heat. But it's quite pleasant today. ये भी अच्छी साउंड कर रही है इंटरसेप्टर। ये तो स्टॉक साउंड है इसका, बता रहा है वो मेरे बारे में। हाँ, नहीं अरुणाचल से आई हुई है, इसके बाद रिपेयर होने के लिए आती है ये। शशांक की अपनी बाइक दिल्ली में रहती है ना इसकी तो। ऑलराइट सो गाइस, आई थिंक वी आर हियर, बट ये बंद लग रहा है। So I don't know what the guys are doing. कुछ और प्लान कर रहे हैं क्या? वी आर प्लानिंग। कोई कांड होते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ये। पिछली बार हमारा ये गिर गया था, इस बार हम इसका ध्यान दे रहे थे तो साला इस बार नंबर प्लेट गायब हो गई, पता नहीं कहाँ गई नंबर प्लेट। अब चलो वापस ही देखते हैं, कहीं लगा लेंगे वापसी में। आज ही करना पड़ेगा। आगे चलना है, इसको खुलने के लिए टाइम है अभी। अच्छा सो गाइस, मेन जो हमारा ब्रेकफास्ट जॉइंट था वो तो खुला नहीं है, तो वी आर सेटलिंग फॉर दिस कलीता अंकुर। सो गाइस, हमारा ब्रेकफास्ट इज़ डन एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक एंड दिस प्लेस एंडेड अप बीइंग आवर ब्रेकफास्ट जॉइंट। प्लान कुछ और किया था, बट यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया है हमने। ऑसम, बेस हैवी। The ZX6R sounds brutal with that Austin Racing exhaust. Hear that ZX6R screaming on the top of our lungs. Wow. One most beautiful thing about this brotherhood, the biking brotherhood, is that here there are no strangers. Other than Shashank and Rehan, I was meeting all these bikers for the first time. All of us were from different backgrounds, different walks of life. The love for motorcycles, the passion for riding these beautiful machines surpassed everything that day. We met and instantly
we made that bond which will definitely last for a lifetime. So yes, it is rightly said that in the world of bikers, there are no strangers, only brothers that we haven't met yet.